Namaste dosto, welcome to Math Shala. I am Gauri Vanna, your maths mentor. And today we are going to solve question from linear inequality exercise 6.1 of NCERT, question number 26 and 25. 25 will start from 25 and the statement of the question is the longest side of a triangle is 3 times the shortest side. And the third side is 2 cm shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 cm, find the minimum length of the shortest side. So we'll assume let the triangle be ABC and the shortest side भी आप यहाँ लिख लेंगे let the shortest side be x. Let the length of the shortest side be x centimeter and इस ये क्या कौन सी साइड है हमारी AB and longest side क्या हो जाएगी? It is longest side. AC is longest side and it is 3 times the shortest one. And what is the third side? BC. थर्ड साइड कितनी हो जाएगी? लॉन्गेस्ट साइड से 2 लेस. We have already mentioned. Now the perimeter is what? Perimeter according to the conditions, the perimeter is greater than equal to 61 centimeter. What is the perimeter? AB plus BC plus AC. Now what is AB? It is x. What is BC? 3 minus 2 and what is the longest side? So it is what? Add करेंगे 7x minus 2 greater than equal to 61. So what we are getting? We are getting it implies what? It is 7x greater than equal to 61 plus 2. 7x is greater than 63 and now because we need the value of x shortest side का length चाहिए हमको तो it is dividing both side by 7 or bring 7 on this right hand side positive quantity है तो there is no change in the order of inequality. So हमारा shortest side जो है it should be greater than equal to 9 at least 9 इसकी length जरूर होनी चाहिए. So इसके आंसर में सिर्फ ये लिख देंगे the length of the shortest side be at least minimum length of shortest side. ऐसे ही आंसर लिखना होता है shortest side is 9 centimeter. Word problem में आंसर भी word में ही लिखते हैं. So just have a look and just see it, watch it properly. We'll move to the next question. Okay students, let's move to next question number 26 and in this question in the statement we have a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second length? So let's start this question. We have already made this diagram for you. This is the board of length 91 centimeter and the length of first let the length of shortest side was shortest. So part 1 कह देते हैं. It is what? Let it be x centimeter. Now according to condition second length यहाँ लिख देते हैं. second length कितनी होगी?
3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। सो आप चाहे यहाँ सेंटीमीटर लिखें ना लिखें कोई बात नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लेंथ कैसी होगी? इट इज द लार्जेस्ट, it is twice as longer as the shortest. Now condition क्या है? That the sum should be, कितना होना चाहिए इसका sum? Its sum should be less than equal to 91। देखिए ये तीनों लेंथ इसी बोर्ड से काटी गई हैं, तो इनका सम कभी भी 91 से बड़ा नहीं होने वाला। हाँ, इक्वल हो सकता है या इससे छोटा रह सकता है, काटते हुए जरूर कुछ ना कुछ लेंथ कम हो जाती है। So it is 4x plus 3 less than 91 and it is 4x less than 91 minus 3, so it is nothing but 88. So what we are getting, 4x is less than 88, less than equal to, so x is less than 88 by 4। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाकर डिवाइड होगा और पॉजिटिव क्वांटिटी, देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। सो इट मींस x इज लेस देन 22। इसकी लेंथ 22 से कम होनी चाहिए, बट देयर इज अनदर कंडीशन। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? अनदर कंडीशन ऑन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन इज what are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. Third length is 5 centimeter, at least 5 centimeter longer, that is why अगर exact होता 5 centimeter तो हम सिर्फ इतना डालते, लेकिन अब क्या है, at least है वर्ड, मीन्स इतनी या इससे ज्यादा। तो थर्ड लेंथ क्या है हमारी? थर्ड लेंथ इज 2x एंड द सेकेंड लेंथ इज x plus 3। पहले इसको ब्रैकेट में डालेंगे। बच्चे अक्सर गलती, इतने सिंपल क्वेश्चन में बच्चों से गलती क्या होती, वो इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं तो गलती हो जाती। ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बस यही गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, और कोई गलती नहीं होती उनकी। एंड इट इज व्हाट x minus 3 greater than 5 implies x की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको अकेला छोड़िए, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर ले जाइए। सो x should be the length, the shortest length should be greater than 8 and less than 22 according to, I mean in these, using these two conditions, आप इसको a और b लिख देंगे। using condition a and b, x should be less than 22 and greater than 8, तो the length, shortest length should be greater than 8 centimeter and less than 22 centimeter. So this should be the answer. Answer properly लिखना, the shortest length is to be should be less than 22 and greater than 8 centimeter. ये आपका आंसर होना चाहिए। So keep watching Mathshala and if अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।